Okay. Hello. Hi, everyone. So, good morning. Welcome to the session. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. So, Good afternoon. today is 4th Jan, and today is the fifth class of AWS, or we can call it day 5. Okay. So, we have started the class, and can you please mute this background noise from? Yeah, fine. So we have started our class and we have seen AWS overview. And in AWS overview, we have seen lot of things like AWS infrastructure. Everybody is aware now. AWS infrastructure. What is different type of AWS infrastructure? What are the key components comes when we're talking about AWS infrastructure? So the first key component is region, and then we have availability zone, and then we have point of presence. Okay. Then we spoken about AWS billing. We know how AWS billing happens, and what happens when you don't pay the bills. Okay, and it is kind of postpaid. The billing is postpaid, so it's time to go and check your bills. But I believe you guys will not have any charges because you haven't done anything which attract some cost. But if you go and if you take a look to my AWS account, I will definitely have certain charges. Go to billing and cost management, and here you will get to know in this cycle what according to your usage, what is the projected bills that is going to comes to you. So if I show you mine, it is taking the fetching the details. So last month the cost was $16. This month up to date is $1.19, and it is forecasted that my bill can go up to $3.77. Now, what else services I have used in Jan 2025? So if we talk about Jan 2025, $1 charge I have been charged for Amazon Route 53, and for that there is a 18% GST. So that basically comes $1 and 1.8 cents. Okay, so the bill that I have is $1.19 cents. Okay, that is what the thing is. And if you see the December month, in December month, some of the few services that I have used, and out of which I have been charged. Okay, so others is according something around $12. So always keep an eyes on your billing, what is charging you. And in case if you don't want to pay extra, you have to put an budget and a budget alarm. I have shown you how to put a budget alarm. So budget alarm is something that will prevent you from unwanted bills. Correct? Everybody understand what is budget alarm and what is the use of budget alarm? Everybody have budget alarm? Yes. Okay, Yes, yes. cool. Now coming back to our sequence, we have understood what is the method to connect with AWS. So there is something called as AWS support. You can go and you can raise case against any issues. Since you are basic account, there is no technical support. So for basic account holder, there is no technical support provided. But if you want to know anything about accounts and all, you can connect with AWS support center. After this, we have seen a different type of accounts, AWS account types, and there are different type of accounts that we have. You guys better know there are four different type of accounts that we have already spoken about them.
Okay. We have told you some things like global services, what is global services, and what is regional services. Anybody can explain me what is global services and regional services? What is the difference between global services and regional services? Global services are not region specific, so they are available everywhere. Yeah. Region specific are like specific for served in particular geographic area, that is a region, Okay. as in AWS. Correct. Makes sense. Very good. So I think we have spent around 1 day or 2 day of time understanding these things, and then we have started with one of the topic, and the name of the topic was AWS IAM, and the purpose behind IAM. So, what is the concept that we need to understand? So, IAM is a service, okay, but there is a concept, and the concept IAM is a service which helps you to implement, which helps you to implement user management. So when it comes to user management, this user management can be done in various places. So user management can be done on Windows level, user management can be done on Linux level, AWS, Azure, and GCP level. So I have shown you that as well. And when it comes to IAM, IAM में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है? So you should be creating a tree like this. तो IAM में आपको पढ़ना है user. You should be aware what is roles, what is groups, what is policy documents. Policy document is of two types. One is your AWS managed, another is your customer inline. Okay. In IAM, you need to understand root user, what is root user, what is admin user, what is root user, what is admin user, what is a power user, account, AWS account number, AWS account number. Okay. What is access key, access key, secret access key, secret access key, and there are a couple of more things that you need to understand when it comes to AWS. How you can add a user, how you can create a user, how can you assign a permission to the role, which one is safer roles as well as. Correct. So, yeah, this is what we have done, and you can see the recordings here. Everyone can see the recording. Go to the course and content, and you will find your recording over here. So, till far, okay, okay, till far we have two classes, or we had four. So we have three classes, sir. Okay, one sec. Why? No, we okay. 1941. Okay. Okay. So this is not correct. Okay. Okay. So we had class on 21st. There one more is there, right? That is not uploaded, right? Yes, correct, 15. sir. 14th of December. Okay. Yeah, So 14 days. 14th We, of 14th of yes. December. Okay. So just to be on track and just to help you understand where we are and what we have done. So we got one class on 14th. Okay. So we got one class on 14th. So we will have proper track, and somebody can basically help in maintaining this. So 14th December we have one class, and then we have another class on 21st December, 21st.
and then we have third class on 22nd December, and today is basically the fourth class of our AWS, and tomorrow will be the fifth class. Okay, so this is what is in progress. So you can see, I will see why it is not uploaded. Even I have asked them to upload, but mm, okay. So these are the recordings available. I think you have shared on our group the Yeah, yeah, recording yeah, of 14 December. yeah. Yeah, yeah. So this is already with you with the help of Google Drive. Anyone who don't have access to it, anyone who don't have access to this particular video as well, everyone. Okay, chaliye, it's okay. So, in today's class, what we are going to study? In today's class, we are going to study about a topic, and that particular topic is called as S3. We're gonna be studying S3, and in very simple terms, S3 is called as Simple Storage Service. Simple Storage Service. Now, what is the problem this service is solving? ये जो सर्विस है सिंपल स्टोरेज सर्विस किस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग? So it is also solving a problem, and it is solving a problem of unlimited storage. So if you are willing to store unlimited amount of data, if you are willing to store unlimited amount of data, you can come to and you can upload your data to AWS S3. So in very simple words, AWS S3 is a unlimited storage provided by AWS. Anyone can upload any amount of data to S3. So upload, upload unlimited, unlimited amount of unlimited amount of data. Okay. Now, before we proceed further, we will break down this particular word, data. What is data? Anybody knows what is data? Collective information of our files. Okay, what is data? Information with respect to any object. Information with respect to any object is called as data. So let's suppose in my room there is a fan. So there is a fan. So this is a fan. What kind of data for we can have for this fan? फैन का क्या क्या डेटा हो सकता है? It is like brand of the fan, color of the fan, specification of the fan, correct? Number of number of blade in the fan, correct? So this is what is data. So S3 is a service which is used to store unlimited amount of data. Now we need to understand what is data first. So what is data? Before we jump into S3, we need to understand what is data. So data is a piece of information. In very simple word, data is a piece of information. Data is a piece of information. Okay. Now data can be divided into three parts. So we have divided the data into three parts. One data is called as structured data. Another is called as unstructured data. And then we call it semi-structured data. So what does the structured data means? What does semi-structured data means? What is unstructured data and what is semi-structured data means? Structured data, semi-structured data, or unstructured data. What are these three type of data? So can you tell me one thing? So this is also a data.
Okay, if we take an example, this is also a data. This is also a data. Here the length of the data is different. Here the length of the data is different. Here the length of the data is different. So here the length of the data is different, right? So everywhere the length of the data is different. So data is classified into three categories. There is something called a structured data. What is the example of a structured data? What is the example of a structured data? What is the example of unstructured and semi-structured data? Okay. Now take a look to this one. Structured. Structured data versus unstructured data versus semi-structured data. The easiest way to learn anything is by going and taking a look to their diagram. So this is a very important diagram. So structured data means any similar type of data is called as structured data. If all of your data is of same size and same object, those are called as a structured data. There is something called semi-structured data. Some data having same size, some data are of different size. That is called semi-structured data. And if you talk about unstructured data are the data which are random shape and size. Now, if I tell you one example, you have photos in your mobile, all those photos are semi-structured data or structured data or unstructured data, I call it semi-structured because they are of same type but of different sizes. different sizes. Now you go to YouTube. In YouTube, we have lot of videos, right? Nobody knows. Do all the videos are of same length and same format? Nope. No. No, no. No. So what does it means? It means the data is semi-structured. Honest. Semi-structured. Unstructured means all are video format only, right? All are supported video formats only, right? So Okay. so we need to understand that the data we are generating is of what type. Are we generating structured data? Are we generating unstructured data? Or are we generating semi-structured data? So if we are generating structured data can be stored in RDBMS, that is called Relational Database, RDBMS, Relational Database Management System. What does Relational Database Management System? The Relational Database Management System is nothing, it's a tabular like structure where the data will be stored in rows and columns. Have you seen this ever? Tabular structure? Yes. Yeah. So relational database management system is nothing. It's a tabular structure. It's a tabular format. If you are storing the data in a tabular format, it means where the data has certain structure. Okay. So if the data has certain structure, that basically comes called as structured data. Like this, if I am going to Flipkart and there are there are two type of data which is generating. One is ki in Flipkart, let's suppose if 10,000 people have done the shopping, they have done the transaction. So if 10,000 people have done the transaction, the data that generated is the data that got generated will be of type structured data, because Structured. Flipkart will be maintaining a table, right, where they will be maintaining the name of the person, mobile number of the person, which item they have purchased, what is the price of that, what is the pin code, from card payment they have done or internet banking they have done. So Flipkart maintaining this type of data or not? Flipkart is maintaining this type of data. So Flipkart is basically handling two type of data. So when you do the transaction, you are creating a you are generating a structured data. If you are doing a shopping, ever whenever you have done the shopping on Flipkart, whenever you have done a successful transaction, it means you are generating a structured data.
but in multiple occasion you have went to Flipkart and you have just randomly went and just see this that and you just came back, right? So when you go here, when you add this product to the cart, when you add this product to the cart, will Flipkart log this data or not? Flipkart is logging that data or not? Yes. They are logging the data. They are logging the data. You are not doing the transaction, but they are logging the data. So that is not a structured data. That is not a structured data. That might be a semi-structured data and unstructured data. So what is the example of unstructured data? So if we talk about example of unstructured data, so it can be JPEG, JPEG, it can be PDF, it can be XML files, it can be JSON. So these are unstructured data. So and an example of unstructured data I want to show you. So let's go here and do a right click. Okay, do a right click, view page source. Yeah. So if you go here, if you see the page source, so this is also a data, but is this a structured data? Is this a structured data? Can we store this data in a database, relational database? No. Nope. No. Mm, no, This is no. a data, but this is a type of XML data. This is something called XML. So ये एक HTML है, XML है. So these type of data, this is Yes. not a structured data. This is not a structured data. Okay. So this is not a structured data. This is a unstructured data. And if you talk about example of semi-structured data, let's go back and try to see some of the examples. What are the example of unstructured, semi-structured data? So let's come here. Let's go. Yeah. So if you see this particular, let's go here and let's scroll it out. Let's learn from the images. So in today's world, we are generating what kind of data we need to understand. So किसी ने WhatsApp पे hi लिख दिया, somebody has written hi, okay, somebody has written HII, okay. Both the data are same or different? एक किसी ने HI लिखा, ये सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? No. No, no, they both are not same. किसी ने Yes. HII लिखा, so these three things are different, right? Yes. ये so this is different. So this is an example of a structured data. When your data can be stored in rows and columns, so that type of data is called a structured data. This is called semi-structured data, which I have just shown you. It can be XML file, it can be JSON, it can be HTML file, it can be anything like that. And then there is something called unstructured data, where everything is mixed. Okay, everything is mixed kind of things. Okay. So now here, if you take an example, so structured data is any type of data where formatting, numbers, and layout are fixed examples, a file or record something. And Excel tables are prime example of this, but they are not only example of structured data. Let's come back to our board. So when we are generating structured data, you can store those data in relational database management system. When you are generating unstructured and semi-structured data, unstructured and semi-structured data can be easily stored in DBMS, that is called database management system, or they can called as non-relational management system. In non-relational database management system, it's a flat file hierarchy. It's a flat file hierarchy we call it. And here the data will be stored in JSON format. Here the data is stored in JSON format. Okay. So around 90% of the data which we are generating in today's world is of unstructured and semi-structured. Only 10% data we are generating is the structured data. Okay. Do we know how much data we generate per second? How much data we generate per second across the globe?
How much data we generate per second? Anybody knows? Maybe terabytes. Not sure. Eight, 80 terabyte data we generate per second. 80 terabyte data we generate per second. There was a record. Facebook was generating 570 terabyte data in 24 hours. So Facebook was people were giving, people across the world, they were giving 570 terabyte of data every day. Now this number might be lower because now people are not interested in Facebook. Everybody is on Instagram. Okay, everybody, I don't know what they are doing, but everybody is there on Instagram. Okay. So we are basically sharing our lot of information, and you guys, and we all are from IT, so we need to have understanding of data protection. Publishing of personal identity should be lesser. You should be putting less and less or lesser quantity of your personal information out there. Okay, so this is, and then just to give you one example, I got a Facebook account. I have one Facebook account, and what is the size of one photo? 5 KB. What is the size of one photo? Normal. 5 It MB. it could be around 100 KB to Fine. maybe couple of MBs. So I think two depending M. on Uh, the result. Yeah. if you take a picture in your mobile, the size photo will come 5 MB. Try to click a photo and see the size of one photo, 5 MB. So in my account, I'm just taking an arbitrary number that I have 100 photos. So 100 photos multiplied by 5 MB, how much data we are putting? 500 MB data we are putting, and I know this number is very less. In one account, in one Facebook account, we have 500 MB of data. We have 500 MB of data. Now how much account, how much accounts we have for Facebook? So sometimes back Facebook says ki they have 150 crores account basically. So I don't know how many zeros we have to put. Okay, so just put these many zeros. इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 lakh 10 lakh crore, we call it something like this. So and then multiply this with 500 MB, okay, get a number. So how much data Facebook is handling free of cost? Okay, so what they are doing, they are collecting lot of data, and these data they are using to understand the pattern, how we are behaving, how we are doing. So they understand the pattern with the help of uh, our data. ओके, तो फोटो शेयर करने में और फोटो हर दिन शेयर करने में डिफरेंस है, यू नो. So if you are sharing a photo once or twice, that is a different thing. If you are sharing photos on daily basis, that is a different thing, you know, and you are doing nothing, you are putting your life on risk by putting everything online. So try to avoid as much you can. Now, so why I'm telling you this, because when we generate a lot of data, there is something called data redundancy will happen. Data redundancy will happen. Okay, redundancy means if you are placing the same amount, same data at multiple location, that is called data redundancy. Okay, data redundancy. And storage is very costly. Storage is very costly means if you go to the market, if you try to buy a 4 TB hard disk, how much it will cost? A 4 TB hard disk will cost you 10,000 rupees. Okay, so you will get 4 TB hard disk for 10,000 rupees. Understand how much money they are investing in storing this much data. Okay, so data is generating everywhere. Data is generating from everywhere, and there are something called as 5V. There is something called 5V. We need to understand 5V as well. What is 5V basically? 5V is basically a term coined inside big data, and 5V denote volume. What is the volume with which we are generating the data? The velocity,
how fast we are the data is generating, the amount of data, and with what pace we are generating the data, what are the variety, what are the different type of data we are generating, what is the veracity, the data we are generating is having worth or not, and then there is something, the value. So is that data hold any value or not? So these five things that need to be reminded. Now I will tell you one example. This is a live website. Let's go to this one. So this is a live website, and this website will track the real information of all the flights which are flying on top of your skies. Why I'm showing this to you, I am trying to help you understand how much data we are generating. I'm just showing you one application. This particular application is basically showing you live. Okay, so this is live information. If you minimize it, you will see what is happening on top of your skies. So on top of skies, these many aircrafts are now airborne. So these are the flights which are actually flying. This is not a dummy. This is not fake. These are the actual flights which are flying on top of our skies, and these are actual. So if you click any of this particular picture, you will get to know what is the details. The data is loading. It will take a while to load all the data. Okay, so this particular flight Bangalore to Delhi, and it has done this much time and XYZ. Now tell me, when this flight is flying from one location to another location, will it generate some data or not? It will. Yes. Uh, Yes. yes. So in flight, you might have seen there is something called as flight cockpit, right? So I'm a plane enthusiast, so I know a lot of things about flight. So so if you see in the flight, there are so many equipments. What these equipments will do? So during the flight time, these equipments will calculate and store some of the informations. Now, if the flight is flying from Bangalore to Delhi, what is there, Air India? Will Air India will throw that data or delete the data once the flight will land, or they will keep it? We keep it. They will keep it. They will keep it. And just for a rough number, can you imagine how much GB data they are generating in 2 hours flight time? Bangalore to Delhi, it will take 2 hours. So during the 2 hours flight time, how much data this guy will generate? Maybe 2 or 3 GB Okay, maximum. let's take your answer, 2 or 3 GB. Now, can you see how many flights are there? Can you imagine the amount of data we are generating? We cannot imagine. We cannot We imagine. Yeah, we cannot imagine. Click on any aircraft, you will get to know the actual live location. This is going from Montreal to Toulouse. Where is Toulouse? I don't know. Okay, so this is how the things look like. Okay, now, so digital, so all these are digital, right? So we are in digital age, and we are generating a lot of digital data. But when we are generating the digital data, there is no problem in generating the digital data. But the question comes in ki where you are going to store the data. So if you are generating the data, what type of your data is? If you have data, that's not a problem. But the problem is ki how you gonna be storing that data, how you will store the data. If you are storing the data, so then how you are going to process the data, because it's not easy to process humongous amount of data. So when you have data, how you going to be process the data, and once you process the data, then what is the value or what is the insight you are bringing from the data? Okay, so this is what we need to understand, and in this whole journey we are going to talk about, if you have unlimited amount of data, where you gonna be storing. Okay, so that is the problem AWS S3 is solving. AWS S3 is saying
कि if you have unlimited amount of data, don't worry, come to me. I will store all of your data to or I will store all of my data to S3. Okay, so that is why AWS S3 comes into picture. The second service that we are talking in AWS is a storage service, and that gives you a problem, that gives a solution. It's a solution for unlimited storage. So if you have unlimited amount of data that need to be stored, the best part is that AWS S3 will store structured, unstructured, and semi-structured data. It will store all type of data. It's not about that it will only store structured data. It will store structured, unstructured, semi-structured data. So AWS S3, so the data can be three types: structured, unstructured, semi-structured. Okay, and what AWS S3 says, ki AWS S3 is a simple web service interface that you can use to store and retrieve any amount of data at any time from any part of the world, okay, with the help of internet. And when AWS has been started in the year 2006, S3 was the very first service with which AWS came into picture. When AWS was launched, they started this particular service. They told people that you can use this particular service for storing your data. Earlier, people used to take what? Earlier, people used to take their hard disk or their laptop to anywhere, when they go. So once S3 kind of service comes into picture, you upload your files, you go to USA, you download the data there. You don't need to carry the data physically. The data can be uploaded in the cloud and can be downloaded at any point in time with the help of internet. Is that make sense to everyone? Yes. Okay. Yes. Now, so where do we store data in Windows? So we have for storage, for data storage, what we have. तो हम data कहाँ store करते हैं? तो we store the data in our laptop, right? सबके laptop में we will have C drive, D drive, E drive, F drive, something like that, right? We store the data in drives. तो in Windows, what we do, we have one physical hard disk. हमारे laptop में एक physical hard disk है, right? So we got a physical hard disk, and that physical hard disk is divided into. We got a physical hard disk. In my laptop, I got 500 GB, 500 GB, 500 GB of hard disk, 500 GB ऑफ हार्ड डिस्क. ये एक फिजिकल हार्ड डिस्क है. इसको मैंने लॉजिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फिजिकल हार्ड डिस्क को लॉजिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सी ड्राइव एंड देन डी ड्राइव. सी ड्राइव 250 GB कर दिया और डी ड्राइव को 250 GB कर दिया. So when it comes to data storage in Windows, so we store the data in drives, and drives is basically the logical partitioning of a physical device. So what is drive basically? So drive is nothing, it's a logical partitioning of drive. When it comes to Linux, so where do we store the data? Linux में कहाँ data store करते हैं? हार्ड डिस्क में. हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं. तो लिनक्स में हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके से दिखता है. कैन यू सी दिस स्लैश डेव एक्स2डीए? तो ये हार्ड डिस्क है. इस हार्ड डिस्क को हम माउंट करते हैं. तो इस हार्ड डिस्क को हमने माउंट किया. व्हाट इज द साइज ऑफ हार्ड डिस्क? कैन यू सी हियर? 8 GB, 7.9 GB. 7.9 GB, 8 GB इज द हार्ड डिस्क. तो इसका आंसर क्या है? हम हार्ड डिस्क नहीं बोलते, क्या बोलेंगे उसको? फाइल Partition. सिस्टम. हाँ, फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम में हम स्टोर कर रहे हैं. ठीक है. When it comes to AWS S3, so where we are going to store the data? S3. बकेट. Bucket. कहाँ स्टोर करेंगे? Bucket. बकेट में स्टोर करेंगे. So we have, this is how AWS S3 look like. This is how AWS S3 look like. And AWS S3 look like, and in AWS S3 we will have bucket. Okay, so we can create multiple buckets. Okay, so why there is need to create store the data in multiple buckets?
because different type data is Okay. available there. To provide a structure for data, basically. Okay. You call it that way. तो ओके, क्लास 11th में हम लोगों ने फिजिक्स की कॉपी अलग बनाई थी, केमिस्ट्री की कॉपी अलग बनाई थी, और बायो की कॉपी अलग बनाई थी, एंड मैथ्स की कॉपी अलग बनाई थी। क्यों हमने क्यों नहीं एक ही कॉपी में सब लिखा? कोई है यहाँ पे जिसने सारा कुछ एक ही कॉपी में लिखा था? फॉर डेटा Segregate. segregation. So we can create multiple buckets. We can create multiple buckets, and multiple buckets allow you to segregate your data. Now I am the person who is sitting here with my system, and I have a file, and the name of the file is called hello.txt, and this is a file in my system, and when I want to upload this file inside this bucket, so files are called as Object. फाइल्स को हम क्या बोलते हैं? फाइल्स को क्या बोलते हैं? Object. ऑब्जेक्ट. So multiple buckets can be created. Files are called as object in a bucket. N number of files can be stored in a bucket. N number of files, n number, n n number of n number n number of objects, n number of objects can be stored in a bucket. Okay. Bucket has no size. Bucket has no size. अच्छा, एक बात बताइए, किसी डायरेक्टरी की साइज होती है क्या? मेरे पास यहाँ पे कई सारे डायरेक्टरी है, इसमें से किसी डायरेक्टरी का एक साइज होता है क्या? डायरेक्टरी का खुद का तो साइज नहीं होता, उसके अंदर के कंटेंट का टोटल साइज डायरेक्टरी का साइज बेसिकली, राइट? वेरी गुड. तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द साइज ऑफ द बकेट, तो आंसर गोज लाइक दिस. तो बकेट कुछ भी नहीं है. बकेट इज सिमिलर टू Size of data. yes, size. Bucket equals to directory in Windows, or bucket has no size, but if somebody specifically want to know the size of the bucket, तो क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा? तो कंबाइंड साइज, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कंबाइंड साइज कंबाइंड साइज ऑफ all the objects in the bucket, all the object in the bucket is called as will be the size of bucket. ठीक है. तो हम मल्टीपल बकेट बना सकते हैं. बकेट का कोई साइज नहीं है, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट का साइज होता है. फाइल्स जो बकेट में जाती है उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और एक बकेट में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. मेक सेंस? मेक सेंस गाइस? जो ऑब्जेक्ट है, Yes. ऑब्जेक्ट्स बोले तो क्या? फाइल. जो ऑब्जेक्ट है यानी फाइल है. ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू फाइल. Size can vary. Size can vary. Size can vary from 0 KB to 5 terabyte. तो एक ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा, सबसे मिनिमम साइज क्या हो सकता है? तो आप एक ब्लैंक फाइल भी अपलोड कर सकते हैं. यू कैन अपलोड ए ब्लैंक फाइल. तो ब्लैंक फाइल है जीरो साइज, 0 KB साइज. So you can upload a blank object, and you can upload a object of size up to 5 terabyte to AWS S3. Is that make sense? Is that make sense? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Now, so there is one thing. Sir Jeff Bezos, when Sir Jeff Bezos was there, right? So is he's still there. So Sir Jeff Bezos
when he created this particular service. So तो जब इन्होंने ये सर्विस बनाई 2006 में, तो ही वेंट टू पीपल एंड सेड, he went to multiple people and said कि do you want to try and use a service called AWS S3। तो उन्होंने लोगों को बोला कि आप AWS S3 ट्राई करेंगे क्या। तो डू यू वांट टू ट्राई, डू यू वांट टू ट्राई AWS S3। तो उन्होंने लोगों को बोला, लोगों ने बोला कि ओके वी आर ओके टू ट्राई, बट इन्होंने पूछा कि जैसे हमारे कॉलेजेस करते हैं, जैसे कॉलेजेस हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहते हैं 100% प्लेसमेंट, बस प्लेसमेंट कितने का होता 0%. है? 0%। तो तो उन्होंने पूछा कि ठीक है हम आपकी सर्विस ले लेंगे, तो आपकी सर्विस अवेलेबल कब कब रहेगी। तो अवेलेबल का मतलब हो गया कि व्हाट इज द अवेबिलिटी और व्हाट इज द अप टाइम ऑफ योर सर्विस। तो ठीक है हम आपकी सर्विस तो ले लेते हैं, लेकिन रात में 3 बजे अगर मैं AWS S3 पे फाइल अपलोड करने गया तो पता चला कि AWS S3 डाउन है। तो सर जेफ बेजोस ने बोला कि हमारी जो सर्विस है वो 99.99% जो है वो अवेलेबल रहेगी। It means if you are taking AWS S3, 99.99% AWS S3 will be available all the time। तो अगर कोई बंदा 99.99% भी गारंटी देता है कि उसकी सर्विस अवेलेबल रहेगी, इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या बोल रहा है कि पूरे साल में तो भी 4 घंटे का डाउन टाइम रहेगा, 4 आवर्स डाउन टाइम। ठीक है ना? ठीक है, तो लोगों ने बोला कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि आपकी सर्विस 99.99 रहेगी, वी विल ट्राई विद दैट। नाउ लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा कि ठीक है हम आपकी सर्विस तो ले रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस। तो ड्यूरेबिलिटी मींस कि हमने आपको अपना डेटा दिया और डेटा डिलीट ना हो जाए, आपके पास से डेटा डिलीट ना हो जाए। तो अगर आपका डेटा डिलीट हो गया तो आप क्या कहेंगे, मीन्स बिकॉज दिस पीपल आर वरीड राइट कि हम आपको ये वो सर्विस, ये एंड यूजर ऐसी सर्विस क्यों लेंगे जहां पर उनको अवेबिलिटी ना मिले या ड्यूरेबिलिटी नहीं मिले। ड्यूरेबिलिटी रेफर्स टू द टर्म डेटा प्रोटेक्शन। तो इन्होंने कि हम अगर आप हमारी सर्विस अगर हमारे क्लाउड पर या हमारे S3 सर्विस को यूज करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो डेटा है वो 99.99% जो है, 99.99% बोले तो 9 to the power 11 टाइम्स मैं गारंटी देता हूं कि आपका डेटा कहीं भी डिलीट नहीं होगा। सो योर डेटा इज सेफ अप टू दिस मच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो योर डेटा इज सेफ अप टू दिस, वो इतनी गारंटी देते हैं कि आपका डेटा कभी डिलीट नहीं होगा। Okay, so there are two terms whenever you are studying AWS S3. So there are two terms that comes into picture. What is the availability? What is the availability of AWS S3? What is the availability of AWS S3 service? So availability of AWS service is 99.9%. It can be written as 9 to the power 4. And what is the durability? So durability of AWS S3 service is 9 to the power 11. Okay, make sense? Okay, can you please everyone please read this line? दादा आरती कास्टे का Excuse me, can you mute please? So I want you to read all these lines and help me understand whether you understood this or not.
All points are okay? Or do you need any help on this? हेलो सर, ये Yes? लास्ट पॉइंट सर एग्जैक्टली हेल्थ चेक का आपकी तरफ से है क्या हो? हाँ, ये मेरी तरफ से। लास्ट पॉइंट Uh, so quick question on the multi-part upload API. Okay, multi-part upload API. Okay. Anything else? Okay. So I will show you how to create a bucket first. Okay, बहुत simple है. It's very very damn easy. There is nothing to be very fascinating about it. So if you want to create a bucket, you will go to AWS S3 landing page. So this is AWS S3 landing page, and there is an option right now. I got 26 buckets. Okay, and you can see there is something called as create bucket. So click on create bucket. This create bucket will help you to create a bucket, and you need to specify which region your bucket will be there. It means which region your data will be sitting, which data center your data will be sitting. I so here I want a bucket, and the bucket name has to be unique. It should not be same. So I will be using a random bucket name 2025. If I go and try 2025, it will not allow me to create a bucket. I am simply going and creating a bucket. So once I will click it here, so if this name is already there, it has been created. But so this has been created. But if I go and if I choose some name, let's suppose if I go and choose a name similar, simple, if I choose Satyam. So Satyam is the name that somebody might have taken in the world, and that will not be given to me. So the bucket name has to be unique. Yes, beta. बोलो. क्या चाहिए? Okay, 5 minutes. So you can see that error bucket with the same name already exists. So what does it means? It means that somebody has taken this name, and you cannot use this name. Okay, you cannot use this. Now if you want to create a bucket, so you just saw I had created a bucket, and your bucket will be visible over here, and you can filter the bucket with the help of creation date. So now go here and see the bucket that has been created. So this is the bucket. Now this bucket has no objects in it. So there is no object in the bucket. If you want to upload, so you can upload any object. So I will click on upload. I want to add files or folder. So add files. I want to add some files inside this from my system. I will go to downloads. I will go to downloads, and I will try to upload different files. I will try to upload something application binary, this PPT, a zip, a document file. So what I am doing is I am uploading different type of objects. They are not only one, they are different types. So this is the best part of this particular this is the best part of this particular tool, is that it allow you to upload different types. It's not it restricting you that you will only able to upload PPT or structured data, unstructured data, semi-structured data. So it is a service that allow you to upload structured, unstructured, semi-structured data. Okay, it allow you to have structured, unstructured, semi-structured data. Okay, without any problem.
So now you can see the data is uploading, and I have uploaded quite a lot of data. Okay, so this upload will be quite faster from the normal upload. So if you are uploading this much data on public internet, so what does mean by public internet? So you saw uh, these cables, right? I might have told you about these cables. So any data which is going through these cables, so these are public internet. Okay, these are public data. It means आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज आवाज कम करो और थोड़ा. So if your data is flowing through these wires, it means it's not personal to you. Whole world is using these data. So, so AWS does not transfer their data with these cables. AWS has done investment and they have their own cables parallel to this. Okay, so all the data center in the world of AWS are connected with their own personal cables. Okay, they are not using these cables. They have their own cables. They must have invested money in any of these cables, and they might have partnered with this. Just for an example, I'm showing it to you, help you understand. So if you click on this particular cable, so this particular cable is this much length, 2,800 kilometers, and it is maintained by this particular company, Subsea GXC World, and it has landing point on these one countries. These company decide कि कौन से टेलीकॉम वेंडर का डेटा जाएगा. So these company have right, they control ki which data will flow. Might AWS has done contract with these people, and they have dedicated links, they have dedicated their own cables for data communication. So that is why when you upload to AWS, it will be quite faster, and upload is always take times. Okay, so what is 76% is happening, and it depend upon your internet speed. It depend upon your uh, internet band upload bandwidth. Okay, as well. So upload will be slow. Let's see. So so you cannot upload all these to any of the database. If you have MySQL, if you are using Oracle में आप ये सारा कुछ upload नहीं कर सकते. If you are using MongoDB, you cannot upload everything. Okay, so it is a type of storage that allow you to upload different files and different format. Make sense to everyone? Mm, Okay, now this is completed. Let me refresh. Now I refresh, it will show me the type in very clear format. ये मुझे type दिखाएगा सबका कि कौन सा data कौन सा type का है. So all these are called as folders. कहाँ गया? Okay. Now what is this? Zip. What is this? exe. What is this? HTML. What is this? MSI, PPT, docs. Does this make sense to you guys? Cool. Okay. Now there is something called as multi-part upload. When you are saying कि multi-part upload means क्या होता है कि when you are trying to upload from graphical, there is a limit. How much you can upload from graphical, 160 GB. and if you have more than 160 GB, then you need to upload it through CLI. CLI, and there you need to have multi-part API. So multi-part API, what it will do, if you have like 200 or 500 or 2 terabyte of files, so what you have to do, if you have 2 terabyte of files,
if you have 2 terabyte file, you have big file. So multi-part API, what it will do, it will break that file into multiple segment, that is called chunks, and it will upload one by one. And once it will go to cloud, they will combine all. So that is called multi-part API. So if you are uploading a object that is more than 1 GB, you have to do it through multi-part API, and multi-part API will work from command line. Okay. Now this is your this is your bucket. This is your bucket, and your bucket has total 6 objects, and all the objects are of different size and different formats, which AWS S3 is supporting. Now if you delete anything, it will get deleted permanently. Okay, we will come on that particular part as well. Let's go back to this one. So availability is 99.99%, durability is 99, S3 is global. Now S3 is not global, S3 is regional now. It means you need to specify the regional. S3 is virtually unlimited storage. There is no defined size of S3 bucket. We can upload a single object of 160 GB from graphical. From CLI, we can upload a single object of 5 TB, but we have to implement a multi-part API. Files are called as objects. An object can be of 0 terabyte to 5 terabyte. Maximum how many buckets I can create right now? If I keep on increasing, how many buckets I will able to create? How 100. many? 100. That is called soft limit. What is soft limit in AWS? Soft limit is a capping that AWS put कि कोई भी बंदा जो है अननेसेसरी चीजें जरूरत से ज्यादा ना कर दे, इसलिए वो सॉफ्ट लिमिट 100 रखा हुआ है. यू कैन रेज ए quota increase request to increase the count of the bucket. Agar if you need 200 bucket, then what you need to do? If you need 200 buckets, then what you have to do? We need to create another account. Service No, quota. no. You have to go to service quota. You have to ask them to increase the quota limit for your bucket. So you can see here what is the name of the service? S3. Okay. Now view quota. So it will show you what is the bucket quota. S3 service. How many buckets you can create? Mm, how many buckets you can create at one account level? 100. 100. 100. So if you want to increase this 100 to 200, then what do you have to do? Request an increase of account level. Yes, you have to ask 150, and then you have to request them. Okay. So आवाज कम करो बेटा. AWS can approve or deny or your request. So AWS can do increase or decrease as well. So it's up to them. You cannot decide. So they might can ask you a business justification as. So if you say कि मेरे पास 100 buckets है, and if you want 150, so they will ask a business justification as well. So here I am requesting a service limit increase. So you guys have to also submit a service limit increase if you want to increase. Otherwise, 100 buckets are more than enough. Okay, more than enough. Making sense? Okay, come back. Bucket name must be lowercase and must be unique across irrespective whichever the reason is created. Bucket name has to be unique. Two buckets with the same name cannot be created. Okay, and S3 is universal namespace, means every unique bucket will have a URL. So now if you want to access this resource, if you want to access anything, so if you want to access this, if you want to access this particular file, so click this is what, this is an object inside this bucket. And if you want to access this object, this is the URL. So can you see this URL? Satyam-2050 is the name of the bucket. .s3 .ap-south-1 Amazon AWS.com, and this is the object URL. So this is called as object URL.
can you try accessing this object URL? Yes and no, depending Okay. on privacy setting, I guess. Okay. So if you try to open this, you will not able to open this. Why? That we will explain going forward. So if you try to access this particular URL, you will not able to access. There is a reason. I will explain you the reason why it is not able to do so. Okay, let's come back here to the buckets. Now there are some of the basic points that we have learned. We will revise here. Okay, Advika, जाओ उधर जाओ ना. 1 minute है guys. कहाँ हो प्रियंका? देखो वहाँ जाके देखो बेटा जाओ. Okay, sorry. So यहाँ पे we will have more important points. तो यहाँ पे क्या है जो हमने पढ़ा था, AWS S3 bucket does not have any size. ठीक है. Files are called as object. Files are called as object in AWS S3. Okay. Files are called as objects in a single object can be 0 byte or to 5 GB or 5 TB in size. We can store multiple objects in a single bucket. Make sense? Now, what is the free limit? So you will get up to 5 GB of data storage for free in S3. So if you are storing 5 GB till 5 GB, you are free. But if you are uploading more than 5 GB, you will be chargeable. Okay. So it's not about only 5 GB size is free. How much time you download or upload the data, that is also countable. So with 5 GB you get 20,000 downloads. So you are allowed to download 20,000 times. Okay. And you are allowed for 2000 upload. So upload is called as put and download is called get. So what is free? So you are free up to 5 GB of storage. With 5 GB you are allowed to 20,000 download, and you are upload 2000 upload you are allowed. If you are crossing, let's suppose if you have 5 GB of data but you have downloaded it for 25,000 times, then you have to pay for 5,000 downloads. There will be a charge for you. You have to pay for that as well. Okay. So this is free tier limit. Anybody having any doubt on free tier limit? Sir, quick question. Is this limit applicable to each bucket we create, or is it Account overall level. account limit? Account level. Okay. Okay. Account level. AWS S3 free limit at account level. Okay. Thank you. Okay. Now there is something called as a default behavior of AWS S3 is override, and you are responsible for your own data. If you delete it, you will not get it back. इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे पहला पॉइंट, डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ AWS S3 इज ओवरराइड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है समझने के लिए एक फाइल लेते हैं. फाइल का नाम है, हमारे पास एक फाइल है sunday.txt. sunday.txt कहाँ गया? यस, मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है. फाइल का नाम है sunday.txt. इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है? इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है? Text. हाँ, तो इसके अंदर कुछ कंटेंट है, राइट? टेराफॉर्म, हेल्म, इस्टियो, इसके अंदर कुछ कंटेंट है. सो दिस इज द फाइल. दिस इज द फाइल एंड ये हमारी फाइल है. इस फाइल के अंदर में मेरे पास ये तीन कंटेंट पड़े हुए हैं. ठीक है, दैट इज फाइन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऑब्जेक्ट टू हियर. सो मैं यहाँ पे क्या करूँ, आई एम गोइंग टू अपलोड. तो अपलोड बटन पे जाएंगे, ऐड ए फाइल. आई वांट टू ऐड ए फाइल.
and the file I want to upload is from desktop, and the name of the file is Sunday. Okay, so I am going to upload this file. I uploaded that file. It's a 23 KB file. It will get uploaded in a second. It's done. Now I go here and see, I see the object count is 7. If I want to access this content, I need to go to this URL. Okay, so I am not able to access this content. Okay, I am not able to access this content. So how can you access this content? So there is two things. Okay, there's two things. So whenever you create a bucket, the bucket has to be public. So the bucket has to be public. So the bucket has to be public. So here is the permission. So for this particular bucket, the bucket, all public access, block all public access is on. What does it means? So right now the bucket is private. Right now क्या है? Bucket is private. Okay, let's understand like this. Go here, create a bucket. Okay, अगर bucket public होगा और ऑब्जेक्ट भी पब्लिक होगा, तो कंटेंट क्या होगा? कंटेंट को हम क्या कर सकेंगे? एक्सेस कर सके। बकेट अगर प्राइवेट है और अगर ऑब्जेक्ट भी प्राइवेट है, तो कंटेंट हमारा क्या होगा? कैन नॉट एक्सेस। नो एक्सेस। क्या बकेट पब्लिक है? बकेट पब्लिक है, बकेट इज पब्लिक बट ऑब्जेक्ट इज प्राइवेट। तो यहाँ पे दो लेवल का परमिशन होता है. तो देर इज टू लेवल परमिशन. तो वन इज योर बकेट लेवल परमिशन. तो वन इज योर bucket level permission, and then we have, there is object is residing inside bucket, right? So there is something called as object level permission as well. Object level permission. So if my bucket is public and object is public, then access, it means anyone can access the object. Anyone can access the object. ये फंडा समझ में आया सबको? अगर बकेट प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट भी प्राइवेट है, तो नो एक्सेस, नो वन विल हैव एक्सेस. नो वन will have access. only owner can only owner can download only owner can डाउनलोड इट. तो ओनर डाउनलोड कर सकता है. मैं क्या हूं? मैं ओनर हूं. तो मैंने इसके अंदर में डाला है, राइट? तो इस कंटेंट को मैं क्या एक्सेस कर पा रहा हूं क्या? जस्ट सी, am I able to access the content? No. But can I download this content? Can I download this content? So let me see whether I can download it. So I clicked it and I can download it. So I can download the content, but I cannot
access the content because the bucket and object both are private. Now bucket is public but object is private, तो क्या होगा? No access. No access. Can we have this scenario, please? Can we have a bucket? Can we have bucket private and object public? Uh, most This is not possible. this is, this is not possible. Not possible. Yes. Not possible. Yeah, this is not possible. So this is what the bucket and object relationships are there. Now we will jump into main point. So what is the main point? So main funda is कि whenever you create a bucket, यहाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. Whenever you create a bucket. Bucket is by default Public. private. Oh. Yes, for security reason. Whenever you upload a object, inside a bucket, whenever you upload a object inside the bucket, the bucket of the bucket, और ये bucket आपका public भी हो सकता है और private भी हो सकता है, no matter what. ठीक है, तो भी object क्या होगा? Whenever you upload a object inside the bucket can be public and private, still the object will be still Hmm. the object will be by default private. ठीक है, क्लियर हुआ? पढ़ लीजिए थोड़ा सा. इफ यू वांट टू रीड इट. ओके, किसी को कोई डाउट है? क्लास में कौन कौन से? कैन वी हैव नेम प्लीज? Hemant. Vikram. रोहित. अंकिता. विभू. अंकिता, विभू, आकाश. आकाश, सूरज. सूरज, आदित्य. आदित्य, रोहित. ओके. ओके, तो अभिराज. यस, अखिराज. सो सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Did this? यस. So, okay. So, Swapnil, Abhiraj, Aditya, Vibhu, and Hemant, Nadia, and Ajay, Smita, Akash, Ankita, Suraj, Rohit, Vikram, and Pramila. So, my intention is to help you understand better. Right now, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तो right now we are studying S3, जो कि अनलिमिटेड स्टोरेज के लिए फेमस है. और S3 जो है वो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके पास बहुत सारा डेटा है. वो अपना डेटा जो है स्टोर करते हैं AWS S3 के अंदर में. एग्जांपल ले लूं, नेटफ्लिक्स पूरा का पूरा AWS यूज करता है और नेटफ्लिक्स के पास भर के मूवी पड़ा है. तो वो सारा मूवी नेटफ्लिक्स कहाँ स्टोर करके रखते हैं? क्या मूवी को स्टोर किया जा सकता है ओरेकल में? ओरेकल डेटाबेस में मूवी को स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं. ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल को हम मोंगोडीबी में स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं. मूवी को हम उधर नहीं स्टोर कर सकते, बट मूवी को हम S3 में स्टोर करते हैं. और Amazon अपनी सारी मूवीज S3 में स्टोर करता है. हॉटस्टार अपनी सारी मूवीज, वीडियोस, शोज सारा इसमें स्टोर करता है. इवन कि आप जितने भी म्यूजिक ऐप्स हैं, जैसे जो गाने वाले ऐप है, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना.com, इन सब के बारे में सर्च कर सकते हैं कि ये लोग अपना डेटा कहाँ स्टोर कर सकते हैं. बहुत आसान है, हमें सिर्फ चीजों को पकड़ के पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अब कोई ये नहीं बताएगा मुझे कि बाइजूस अपना डेटा कहाँ स्टोर करता है. बाइजूस, BIJUYSH, बाइजूस सबने सुना होगा.
एक बार फोन कीजिए फिर ये 10 बार फोन करेंगे। हाँ, तो बायजूस में जाएंगे तो वेयर डज बायजूस स्टोर देयर डेटा, वेयर डज बायजूस स्टोर देयर वीडियो, ठीक है, इंटर मारिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और या फिर हम यहाँ पर इसमें सर्च में हम प्लस क्लाउड लिख देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो वीडियोस है वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, ठीक है। या फिर यहाँ पर AWS बायजूस केस स्टडी यहाँ पे कुछ है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे बाइजू का स्टोरी पता चल रहा है, और ये बोल रहा है कि बाइजू इज ए इंडिया लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनी एंड क्रिएट इंडिया मोस्ट पॉपुलर लर्निंग ऐप एंड XYZ, ठीक है। अब बायजूस के जो CTO है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर प्रकाश रामचंद्रन, उन्होंने क्या बोला है, वी नाउ हैव मोर देन 50 मिलियन स्टूडेंट यूजिंग बायजूस मोबाइल ऐप and we could not support that number without being on AWS as our users and subscriber base continue to expand. सो बेसिकली बाइजूस कौन कौन से सर्विसेज यूज कर रहा है वो भी अगर आप पढ़ना चाहे तो इधर से आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हाउ बाइजूस यूजेस AWS। अभी आपको पता होगा कि ये जो बाइजूस का जो वेबसाइट है, बाइजूस में जो वेबसाइट है, अगर आप जाएंगे, क्या नाम भी है, बी वाई, हमारे टाइम पे तो ऐसा था नहीं, हम तो ट्यूशन जाते थे। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है ये किसके ऊपर होस्ट है, कोई बता सकता है कि ये जो बाइजूस.com है कहाँ पे रन हो रहा S3 पे होगा ये, है? S3 पे होगा शायद से। नहीं, S3 पे नहीं होगा। सारी चीजें नेट पे पड़ी हुई है, बस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से किसको ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। फाइंड DNS रिकॉर्ड्स में देखूंगा, ओके। तो मुझे वेबसाइट के ऊपर ही पता चलता है ना सर, सिक्योरिटी में जाके। ये पता चलता है ना कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पता चलता है। तो किसी भी वेबसाइट का हम चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट कहाँ पर होस्टेड है, ठीक है, कौन से प्रोवाइडर के पास होस्टेड है। कहीं ना कहीं तो ये होस्टेड है। तो बाइजूस.com लिख के उसका हम NS रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, यहाँ पे सर्च करेंगे और लुकअप करेंगे DNS को, तो ये पता चलेगा कि नेम सर्वर जो DNS है वो कहाँ पर बाइजूस.com का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। बाइजूस.com का यहाँ पे डोमेन कंट्रोल हु ओनर GoDaddy से लिया है, और ये इन्होंने अपना डोमेन जो है बाइजूस ने होस्ट किया हुआ है GoDaddy के ऊपर, ठीक है। हु चेक, एक सेकंड, मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। GoDaddy का है इनका डोमेन, ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रहता है, बट हल्का इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर जैसे आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो कोई दूसरा का देख लीजिए, जैसे नेटफ्लिक्स का देख लीजिए। netflix.com में सर्च मार के लुकअप DNS करेंगे तो नेटफ्लिक्स कहाँ पर होस्टेड है, तो netflix.com किसके ऊपर होस्टेड है, कहाँ पे होस्टेड है, AWS, AWS पर AWS के आगे क्या लिखा है, AWS DNS। 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 AWS DNS। DNS, यस। उसी तरीके से अगर मैं हॉट स्टार की बात करता हूँ कि hot.star.com कहाँ पर होस्टेड है, या प्राइम वीडियोस कहाँ पे होस्टेड है, तो हॉट स्टार भी यहीं पे है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी आपके जो सबसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो हॉट स्टार हो, चाहे वो प्राइम वीडियोस हो, तो जितने भी आपके बड़े बड़े जितने भी ये सारा का सारा ये लोग जो है वो क्या यूज करते हैं, ये AWS क्लाउड यूज करते हैं, और इनका सारा का सारा डेटा AWS S3 पे स्टोर रहता है, ठीक है। सारा का सारा AWS S3 पे स्टोर रहता है।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको पता चलता है कि AWS S3 का रियल वर्ल्ड में यूज क्या है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और चीजें समझ में आएगी। और यहाँ यहाँ पर आप ना AWS कस्टमर केस स्टडी भी पढ़ सकते हैं। कस्टमर केस स्टडी क्या है? तो AWS के बहुत सारे कस्टमर है जिन्होंने AWS के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली है। ठीक है, हमें वो नहीं जानना है। हमें यहाँ से क्या जानना है? हमें ये जानना है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी है, यहाँ पे कितने लोगों ने रिव्यूज दिया हुआ है। तो 3635 कस्टमर ऑफ AWS हैज गिवन रिव्यू। अगर मैं देखता हूँ कि हॉट स्टार ने दिया है क्या, हॉट स्टार, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ तो हॉट स्टार ने नहीं दिया है, बट हॉट स्टार एक कस्टमर है। तो AWS के पास बहुत सारे कस्टमर हैं और बहुत सारे लोग ये भी यूज करें। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक की कोई कंपनी ले लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में हम यहाँ पे गए, ब्राउज मोर कस्टमर स्टोरीज में गए। ठीक है, यहाँ पर हम फिल्टर कर लेते हैं कोई भी एक ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी की कंपनी। आज अभी न्यू ईयर में बहुत लोग इधर उधर गए होंगे, तो ट्रैवल वाली कंपनीज भी आपको पता होगी, जैसे एयर कनाडा है, यूनाइटेड एयरलाइंस है, रैन एयर है। ये सारी जो कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज किसका यूज कर रही हैं? AWS का क्लाउड का यूज कर रहे हैं डिलीवरी। ठीक है, और इनमें से कोई ऐसा है जो एशिया पैसिफिक में, हम एशिया पैसिफिक में आते हैं, तो एशिया पैसिफिक में क्या थे, ये सारी चीजें इनके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। और इनका इन्होंने क्या यूज किया, जैसे पिज्जा हट। ठीक है, तो पिज्जा हट क्या यूज कर रहा है? अब आप पिज्जा हट जाते हैं, अब जब भी पिज्जा हट जाएंगे तो आपके दिमाग में एक बार क्लिक करेगा कि अरे यार, पिज्जा हट वाले भी क्या कर रहे हैं? AWS क्लाउड का यूज कर रहे हैं। पिज्जा हट ऑस्ट्रेलिया माइग्रेटेड टू AWS, गिव अवे 10,000 पिज्जा इन ओनली 1 सेकेंड। अब इन्होंने क्या किया है इसके बारे में ये बता रहे। तो ही इज द CEO। तो यू कैन हियर दिस वीडियो एंड यू कैन गेट टू नो। प्लस यहाँ पे पता चलेगा वो कौन कौन सी सर्विसेज वगैरह यूज करते हैं ऑल। तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने से भी पता चलेगा कि कौन कौन से लोग क्या यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इफ यू हैव सम टाइम, स्पेंड टाइम मेक माई ट्रिप। देखिए, मेक माई ट्रिप कौन कौन सी सर्विस यूज कर रही है अमेजोन की? ECS और क्या यूज कर रहे EKS. हैं? EKS यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने EKS क्लस्टर बनाया था, अभी मुझे डिलीट करना है। कहा गया EKS क्लस्टर? EKS कौन सी सर्विस है? इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। तो मेक माई ट्रिप जो कंपनी है, जो वो लोग ये यूज कर रहे हैं, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये सर्विस आएगी, मुझे अगर पता है तो आई कैन अप्लाई लाइक दिस। तो मुझे बिना बताए पता चला कि यार ये जो कंपनी है वो यूज कर रही है। आप इसको पढ़ के देखिए कि क्या क्या यूज कर रही है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। एंड जीरो डाउन टाइम क्या होता है, रोलिंग डिप्लॉयमेंट्स क्या होते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर इफ योर जर्नी टुवर्ड दिस। तो इन सब चीजों के क्या लिखा, वी शिफ्ट फ्रॉम मोनोलिथिक एप्लीकेशन टू माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर। तो जो हम डेवॉप्स पढ़ाते हैं, हमारे डेवॉप्स के अंदर में यही चीजें हम पढ़ाते हैं कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन से माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर की तरफ कैसे जाते हैं, हाउ डेवॉप्स टीम्स डू XYZ। तो जो हमारा डेवॉप्स का जो हमारा डेवॉप्स का ग्रुप है उसमें मैं ये डाल देता हूँ, दे विल बी गेटिंग इम्पैक्टेड एंड बेनिफिटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मस्ट रीड करके। ठीक है, तो मस्ट रीड दिस इज। ठीक है, तो आप भी रीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ढूंढिए, निकालिए, पढ़िए। जो जितना पढ़ेगा उतना यूनिक बनेगा। ठीक है, मैं एक नॉर्मल क्लास सबको बता रहा हूँ दिस इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग, बट द वन हु स्पेंड मोर टाइम रीडिंग, practicing, so you have to read and then you have to practice. These are the two things that you have to do. So okay, cool। देखिए, AWS सर्विसेज कौन कौन से सर्विसेज यूज कर सकते हैं, ये सारे सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स गो फॉरवर्ड।
तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बकेट एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमारे पास एक बकेट है और बकेट के अंदर जो भी फाइल्स रखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बकेट के अंदर जो भी डालेंगे उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर बकेट पब्लिक रहेगा और तो ऑब्जेक्ट पब्लिक रहेगा तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बकेट प्राइवेट है और ऑब्जेक्ट भी प्राइवेट है तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। बकेट पब्लिक है, ऑब्जेक्ट भी मेरा प्राइवेट और बकेट मेरा पब्लिक है और ऑब्जेक्ट प्राइवेट है तो कोई एक्सेस नहीं, और ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हम बकेट बनाते हैं तो सिक्योरिटी रीजन के लिए बकेट जो है वो प्राइवेट ही बनता है। और जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हैं, वो बकेट पब्लिक हो या प्राइवेट हो, इट डजंट, द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज प्राइवेट ओनली, द ऑब्जेक्ट विल बी प्राइवेट ओनली। ठीक है ना? तो हम पब्लिक बकेट कैसे बना सकते हैं, या फिर कोई बकेट है तो उसको पब्लिक कैसे कर सकते हैं? ये जो बकेट है ये प्राइवेट है, अगर मुझे इसको पब्लिक करना है तो मुझे यहाँ पर एडिट करके इसकी सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस मुझे रिमूव करके सेव करना पड़ेगा। नाउ ये जो बकेट है वो अब प्राइवेट था बट अब किस में कन्वर्ट हो गया? पब्लिक में कन्वर्ट हो गया। तो हम पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं और प्राइवेट पब्लिक भी कर सकते हैं। ये बकेट अभी क्या हो गया? ये बकेट अभी पब्लिक हो गया। लेकिन क्या इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, क्या इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी पब्लिक हुआ क्या? नहीं। तो बकेट पब्लिक करने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट भी पब्लिक हो गया। हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन, तो ये जो परमिशन है ये किसकी है? ऑब्जेक्ट की है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एडिट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं एडिट नहीं कर सकता, मुझे यहां पर एडिट नहीं कर सकता क्योंकि द बकेट ओनर इन्फोर्स द सेटिंग अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट ओनरशिप। तो होता क्या है कि जब आप नया बकेट बनाते हो, जब आप नया बकेट बनाते हो, ध्यान से देखना, तो एक सेटिंग आप अलाउ करते हो जब आप नया बकेट बनाते हो। इस बार मैं नया बकेट बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेमो बकेट -2025, ऐसे मैंने एक रैंडम नाम दे दिया। नाउ जब आप बकेट बनाते हो तो यहीं पर वाइल क्रिएटिंग द बकेट यू गिव द परमिशन टू चेंज द परमिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के परमिशन को मॉडिफाई करने की कंडीशन नहीं होता। मींस बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे? डिसेबल है। डिसेबल्ड है और ये रिकमेंडेड है। लेकिन जब आप बकेट बना रहे हो तो मेक श्योर करो कि ये ऑप्शन टर्न ऑन करना, तभी जाकर आप ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं तो मॉडिफाई नहीं होने देगा। ओके, ओके। while creating the bucket only. So while creating the bucket you make sure that you mark this ACL enabled, then only you can modify the object level permission, otherwise it will not allow. समझा नहीं समझा? फिर से बताऊं? Okay. Okay. Both Okay, will be private in this case if you're not enabling this. so you have to enable this and then you have to enable the public access, so you have to make the bucket public here. So now with this option you are making the bucket public, and with this option you are giving the permission to modify the object level permission. Yes. तो अभी मैं क्या ऑब्जेक्ट का परमिशन मॉडिफाई कर पा रहा हूं क्या? डू यू सी यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट का परमिशन क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट का परमिशन क्या हो चुका है? ये ग्रेड आउट हो चुका है। Grayed तो out. हाँ, तो फॉर दिस बकेट आई एम नॉट एबल टू edit the object level permission. Reason why? Because while creating the bucket I have marked the ACL Disable. disabled. Did we understand did we understand? Do you want me to write it? Okay. No. No. So यहाँ पे लिखो कि when you create a bucket, make sure make
ACL enabled. You marked ACL enabled. Then only, then only then only you can modify object label Permissions. Permission. ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन. समझा बात? Hmm. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे. जितनी भी चीजें लिख रही है सारा आप अपने नोटबुक्स में नोट कीजिएगा. क्लास अटेंड करने के बाद जब आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे तो नोट्स बनाते जाइए और रिकॉर्डिंग देखते जाइए. ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. नाउ, तो अभी मैं ACL इनेबल्ड कर दे रहा हूँ और बकेट को पब्लिक कर दे रहा हूँ, एंड देन आई एम क्रिएटिंग अ बकेट. सो राइट नाउ ये जो मेरा बकेट बना है वो मेरा पब्लिक बकेट बना है. सो राइट नाउ आई गॉट अ पब्लिक बकेट क्रिएटेड. Yes, I am acknowledging that I made this bucket public. So bucket को public बनाना रिस्की होता है. कंपनी में हम कभी भी पब्लिक बकेट नहीं बनाते. So now I got a bucket created, and the bucket is this one. This is the bucket, and I am going to upload a object to the bucket. So bucket में अगर कोई object upload करेंगे तो क्या वो public होगा, private होगा? बकेट में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे तो क्या वो पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा? Private होगा. प्राइवेट ही होगा. तो अगर हम बकेट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे तो वो प्राइवेट ही होगा. तो अभी हमने इस बकेट में एक ऑब्जेक्ट को अपलोड कर दिया. सो आई हैव अपलोडेड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बकेट. अभी मेरा कौन सा कंडीशन यहाँ पे ले रहा है, ये वाला. तो बकेट मेरा पब्लिक है. द बकेट इज पब्लिक. द बकेट इज पब्लिक बट माई ऑब्जेक्ट इज bucket is public but object is Private. private. तो ये मेरा नो एक्सेस. अभी मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट के परमिशन को क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा. तो आई विल गो हियर. आई विल I will close this. This is the object. This is the URL to access the object. If I go and right click, I will not able to access the object. Now I will go and I will go to the object label permission. Now I see the edit option, and I am going everyone read option. Okay, so I am going to read the giving read option, and I am going to save the changes. So I have done this. Now if I go and if I re-hit the enter, you can see the screen. You see the image that is coming up. So you can click here and see on your mobile or something like this whether you are able to access the content or not. So this is the content when you have accessed the content, when which condition has been satisfied. कौन सा condition justify हुआ यहाँ पे, कौन सा condition justify हुआ? first. फर्स्ट वाला. तो नाउ ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है. तो दोनों, ये प्राइवेट को हमने पब्लिक किया और इसको भी प्राइवेट था तो उसको भी पब्लिक किया. मेक सेंस टू एवरीवन? नाउ डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? क्या बकेट और ऑब्जेक्ट पब्लिक होना चाहिए? नहीं सर. अगर होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो दिखेगा नहीं. अगर होगा तो क्या होगा? Everyone can access. Everyone can access. So that is a risk to the security. So Security. we will learn how to do that. Okay, so we will learn about how to do that. So फिलहाल ये concept समझ में आया सबको? But Yes. Yes, sir. sir, Satyam, Hmm. I have one question. Okay, Hmm. like we know few domain where public can freely access any content. Okay, maybe education purpose or आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. हाँ, आपकी charity आवाज ब्रेक. purpose. Then in that case, hello, Yeah. am I audible? Yes, yes, yes. But it's not Sorry, connected. it's network issue. So sometimes we know, right? Some for charity purpose or for education purpose, some contents are free to Hmm. access. Hmm. So in that case, how they are designing this S3? So how they are designing the S3 is basically they allow some form to be downloaded. Let's suppose you try to download some form. Okay, so let's suppose form 12A download. Okay, so I want to download some 12A form or something.
So if you go to this website, you know this is a website, right? So what they do is they allow you to download this form. So this is a read only operation. So they allow you to read, but you cannot write anything. Okay. Okay. Okay, like this it is. One second, I will show you Mhm. one more thing. So this is also you are getting this form downloaded, right? So basically they have a specific section where they have the files which can be accessed. अभी इस लोकेशन पे फॉर्म 12 है, मैं यहाँ पर अगर फॉर्म 12 इसके अगर ऐसा मारता हूँ तो मुझे दिखता है क्या? नहीं दिखा. इट टुक मी बैक, राइट, इट टुक मी बैक. अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर्म 12 है, ऐसे कोई फॉर्म 10 भी है क्या? तो अगर फॉर्म 10 होगा तो दिखेगा, नहीं है तो फॉर्म हम्म, 10 भी होता है, फॉर्म 10 यहाँ पे डाला हुआ है. तो दिस इज हाउ. एंड वन मोर थिंग आई विल शो यू. मैंने एक जगह और देखा था, AWS S3 का इम्प्लीमेंटेशन था. AWS S3 प्लस form plus download, something like this. Wait a minute. So there is two type of security that we will be talking in the next sessions. Okay, there is something called as cross origin. There is something we can use to. There is something called a static website. So you can have a static website where you can download the thing. And there are a couple of things that we will be learning uh, by one second. One thing is that you can allow, there is something called pre-signed URLs. Okay, so there is something called pre-signed URLs. There are called bucket policies that we will learn going forward. Okay, so till now you managed to understand everyone. Yes. Yes. ओके, तो हम Yes. एक क्विक रिकैप करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा 5 मिनट में. तो सबसे पहले हमने आज के डेट में क्लास जो है वो स्टार्ट किया AWS S3 से. सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है और अलग अलग टाइप का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं. एंड वी आर जनरेटिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मोस्टली, एंड स्ट्रक्चर डेटा कम है. स्ट्रक्चर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रखने का अलग अलग तरीका है, बट when we have unlimited amount of data, we can store all these data together in AWS S3. AWS S3 जो है वो एक वेब सर्विस है, ऑनलाइन एक सर्विस अवेलेबल है जहाँ पे हम डेटा डाउनलोड एंड अपलोड कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे. सबसे पहली सर्विस थी AWS S3 की. यहाँ पर हम मल्टीपल बकेट बना सकते हैं और मल्टीपल बकेट्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं. अवेबिलिटी है, अवेबिलिटी मींस व्हाट इज द अप टाइम ऑफ द सर्विस. अप टाइम कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा AWS सर्विस है ये कभी डाउन नहीं होना चाहिए. कई बार क्या होता है, हम लोकल इंटरनेट लेते हैं, तो अगर किसी ने लोकल इंटरनेट लिया होगा तो उनका बहुत खराब एक्सपीरियंस रहता है. लोकल ब्रॉडबैंड वालों से इंटरनेट लिया तो क्या है कि बहुत टाइम पे क्या होता है, डिस्कनेक्ट रहता है, यू नो. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम तो पे कर रहे हैं पूरा, बट हमें वो सर्विस नहीं मिलती. तो अवेबिलिटी यहाँ पे 99.99 है और ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. बकेट एंड ऑब्जेक्ट के कंसेंट में मैंने आपको चीज़ें बताई है. बकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन किसके अंदर रहता है. तो बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर बकेट नहीं रहता. ठीक है, साइज वगैरह आपको बताया. कितना डाउनलोड कर सकते हैं, कितना अपलोड कर सकते हैं, वो चीज़ बताइए, कितना फ्री है. उसके बाद है कि यहाँ पे लिखा गया है कि वेन एवर यू क्रिएट अ बकेट द बकेट विल बी प्राइवेट, मीन्स नो ऑब्जेक्ट इनसाइड द बकेट कैन बी एक्सेस. जब भी आप बकेट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट बकेट जो है वो प्राइवेट बनता है. अगर आपको पब्लिक बनाना है तो ऑप्शन चेकआउट करना पड़ेगा. You have to make the bucket public in order to expose the object to the outside world. अगर आपको bucket के अंदर का object दिखाना है तो bucket को public बनाना पड़ेगा और साथ में साथ object को भी public बनाना पड़ेगा. Whenever you upload a object, the object will be private, which we have to make public in order to access them. तो जब भी आप एक बकेट में कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट होगा. ठीक है, प्राइवेट होगा. आपको उसको पब्लिक करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया. देखिए अब ध्यान से एक और हम देखेंगे जादू जैसा चीज. कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा बकेट है. लेट्स सी द बकेट इज वेयर इज द बकेट, डेमो बकेट. यस,
अभी डेमो बकेट में ये जो यूआरएल है ये अभी मेरा डेमो बकेट क्या है, पब्लिक है, और ये यूआरएल भी, ये बकेट एंड ऑब्जेक्ट दोनों क्या है मेरा, बकेट एंड ऑब्जेक्ट दोनों मेरा क्या है अभी, पब्लिक पब्लिक है। पब्लिक है। ध्यान से देखिएगा, तो बकेट एंड ऑब्जेक्ट दोनों मेरा पब्लिक है, लेकिन अगर मैं इसी बकेट में सेम ऑब्जेक्ट को दोबारा अपलोड करता हूं, ठीक है, इफ आई एम अपडेटिंग द सेम ऑब्जेक्ट, वो फाइल है पहले से, मैं दोबारा से फिर से वही इमेज को डाल रहा हूं, if I am going to update the same file again, what will happen? So if I am going to update the same file, then that object will turn private again. तो कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट अब पब्लिक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें अपडेट हुआ। तो इफ यू आर अपडेटिंग ए प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट or you are uploading a object, both in both the cases the object will turn by default private. If you want to have access, you go and you edit the access, and you can do only that too when you have ACL enabled while creating the bucket. तो बात समझ में आई, बात समझ में आई? Yes, yes. ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन आप समझ जाएंगे। और दिस इज व्हाट, सो व्हेन एवर वी अपलोड ए ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल बी प्राइवेट, वी हैव टू मेक public, we have to make the object public in order to access them. उसके बाद यहाँ लिखा है whenever we update the same object, the object will be private, we have to make public in order to access them. If you are going to upload or update the same object in S3, it will become private, you have to manually make them public again and again. तो ये इसलिए है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए है कि मान लीजिए हमने कोई फाइल यहाँ पे अपलोड कर दी, चलिए यहाँ पे एक फाइल अपलोड करते हैं sunday.txt, तो यहाँ पर हम ऐड फाइल करेंगे sunday.txt, तो विल गो हियर एंड विल अपलोड sunday.txt, हमने एक फाइल अपलोड कर दिया, क्लिक ऑन अपलोड। तो जैसे ही हमने, मेरा बकेट अभी प्राइवेट है, मेरा बकेट अभी प्राइवेट है, मेरा बकेट जो है वो पब्लिक है, और इस पब्लिक बकेट में ये वाला पब्लिक है और ये प्राइवेट है। अभी sunday.txt को मैं ओपन करना चाहूंगा तो sunday.txt ओपन नहीं होगा, sunday.txt ओपन नहीं हो रहा है। sunday.txt को ओपन करने के लिए what I need to do, I need to go and modify the object label permission and then save the changes. So once I do this, then my sunday.txt will be, sunday.txt will be पब्लिक। पब्लिक। ठीक है, नाउ अब एक चीज और बताता हूँ, अभी मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ज्यादा तो नहीं हो रहा, इज दैट ओके? क्लास में ज्यादा तो नहीं हो रहा? No, no, sir. It's okay. नहीं सर। नो सर। तो टाइम टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सिलेबस काफी बड़ा है, ठीक है, और और Sir, यस, is it possible here, like if we are uploading the same kind of object here, so it will deny to upload here, नो but नो, will इट not? why it will say, why it will say कि why it will deny the same? Yeah, because maybe the content, maybe we are updating the कंटेंट इज content. डिफरेंट, राइट? Yeah, सो यहाँ पे yeah, क्या हो रहा है, देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये फाइल है, इस फाइल के अंदर ये कंटेंट है, मेरा ऑब्जेक्ट भी, मेरा बकेट भी पब्लिक है, एंड ऑब्जेक्ट भी पब्लिक है, दैट इज व्हाई आई कैन सी द कंटेंट। now this is the content I have, what I am going to do, I am going to remove this content, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं नया कंटेंट डाल रहा हूँ, तो आई एम जस्ट पुटिंग Kubernetes, I am putting a Docker, I am putting Crossplane, आई एम पुटिंग वैलेरो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें डाल दी, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ द फाइल इज ऑलरेडी अप देयर, I am uploading the file. The file which is already up there is having different content, and the file I am going to upload will have different content. The file name is same. I am going to upload. yeah. So what will happen? So go add the file, add the file,
and here you go, sunday.txt, click here, open, you got updated, click on update. सबसे पहली चीज ये होगी कि जैसे ही फाइल अपडेट होगा, ये हो जाएगा, टर्न हो जाएगा किसमें, प्राइवेट में। अब जाके आपको इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना Public. पड़ेगा। So you go here and go to the permission, you edit it and you do the public. Now जब हम इसको public कर रहे हैं, तो what will happen is कि when we say mark this public, and now if I go and if I hit this again, what you will see, the content has been Changed. changed। मतलब दो चीजें हो गई, अपेंड हुआ या ओवरराइड हुआ। ओवरराइड हो गया। Override. ओवरराइड हो गया। तो ओवरराइड इज अ बिग प्रॉब्लम। Override is hell is because of override I am losing my data, I lost my data, right? यस। Yes. Previously I Previously had data we data. lost. Yes, so we Yes. have lost that data. So override, the default behavior of AWS S3 is override. That's what I have written over here. So the default behavior of AWS S3 is override, and because of override we lose our data. Okay. Yes. Yes. So there is for then how we can save our data. So there is a term that we will be learning tomorrow. We will talk about that tomorrow. Now there is something called is you are responsible for your own data. If you delete it, you will not get it back. What does it means? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अपना डेटा डिलीट कर दिया। इफ यू हैव डिलीटिंग योर डेटा इंटेंशनली, तो अगर आप ये डिलीट कर देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देना चाहता हूँ, तो अगर आप AWS को बोलेंगे कि डिलीट कर दो, तो AWS क्या करेगा, परमानेंटली डिलीट कर देगा। देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर डेटा बैक इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ओके, तो फिर आप बोलेंगे कि फिर क्या फायदा है। तो अगर मान लीजिए AWS को डेटा डिलीट करने बोला गया और AWS डिलीट ना करे, वो रख ले छुपा के, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? Yes. So, if you are deleting the data intentionally, then you are not going to get it back. अगर डेटा AWS कब देगा? AWS ये बोलता है कि अगर मेरी गलती से डेटा डिलीट हुआ है तो मैं दूंगा, अगर आप अपना डेटा खुद डिलीट कर रहे तो मुझे कुछ नहीं पता। यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डेटा, Mhm. यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डेटा। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे बकेट देखा, बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट देखा, बकेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बकेट पब्लिक कब होता है, बकेट प्राइवेट कब होता है। कभी भी कंपनी में, इन कंपनीज वी ऑलवेज क्रिएट, इन कंपनीज वी ऑलवेज क्रिएट प्राइवेट बकेट, क्रिएट पब्लिक बकेट। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। सो ऑलवेज क्रिएट प्राइवेट बकेट, ऑलवेज ऑलवेज क्रिएट प्राइवेट बकेट। और बाय डिफॉल्ट इसलिए किस तरह का बकेट बनता है, प्राइवेट बकेट ही बनता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि एक्सेस कैसे देना है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड बकेट पॉलिसी, वी विल लर्न अबाउट दैट कि बकेट पॉलिसी क्या होता है और हम उससे कैसे एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। लेट मी, कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई कुछ पूछना चाहता स्क्रीन पे जो भी स्लाइड्स है उससे? Satyam, I have a couple of questions. Okay, the first यस, one is by default nature is override, and if we delete the data, it will permanently deleted. You said right. So there is no नो, retention policy. Let's say both are by both mistakenly. both are two different things, so they are not related point. First is Yeah, कि, sorry. Sorry. हाँ, Okay. first is, So हाँ, first, related to first one, my question is, let's say, uh, same file you said with same content. Let's say हम्म, your file contain 3 rows. You haven't changed anything. You हम्म, uploaded same file again. हम्म, So again, it will become a private, right? Even though yes, there is no correct, change in the content. yes, correct. Okay. Okay. So why they kept such nature? So there is a nature, and that there is a solution for that, that is called versioning. You have to implement a version. Okay, Okay. that, Okay. Okay. So so we'll there, learn next. Okay. yes, yes, so there is a, so this is a problem and we'll tell you the solution. Okay, now there Okay. is something is, this is different term, is like if you delete, if you delete and let's suppose
if you delete something, if you're deleting from Gmail, let's suppose if you want to delete some emails, and if you delete it, and if Gmail will keep it, then it's something wrong, right? It is ethically wrong. So what Agree. it means to say ki, if you are deleting your data, you are responsible. Okay, you will not get it back. Yeah, but Okay. my question is like, Hmm. in many applications or many what I can say platforms we see, Hmm. Hmm. whenever we are creating accounts or something, they will give some policies. Okay, I mean they will keep some our data for 2 days, 3 days if we So are deleting. feature is After that, there. The feature is yeah. there. You have to implement that. Okay, okay. Why I'm So asking, because normally, right in Oracle or somewhere, if we delete the hmm. data, data will be available in snapshots, so we can recover. so I so think there is they a are keeping only. Go so ahead, there go is a ahead. concept. There is a concept called automated backup. Okay, if you're talking about Mm. in that section, so if there is a automated backup enabled, then only the data will be stored. Okay, or if you are taking the snapshot, and if you're keeping the snapshot, then only the data you can recover the data. But imagine you created a new DB where there is no snapshot, no automated backup is there, and something goes down, then what you will do? You will not able to recover, right? Okay, Oracle gives okay. you a feature, but Oracle gives you feature, but you have to implement that. In the same way, AWS says, keep, if you are deleting the data, how can I be responsible? If you want Agree. if you want high availability for a data, go for a solution which I have. Okay, understood. Hmm. Any other point? Anyone? No. Okay, cool. Now, there is something called as S3 object lock. This is an important interview question, can be asked in interviews. What is object lock? Object lock means you can put object lock so that no one can delete that object. What happens? Some people will delete some files mistakenly. So to avoid that, what we are going to do, we are going to apply two type of locks. One is called as retention period, which has a specific date. So if you are applying date lock for 1 month, so 1 month is the retention period. After 1 month, the lock will be removed and anybody can delete if they want to delete it. Now, there is something called legal hold. So if you are applying legal hold on any of the object, then unless until the legal hold is not removed, the object will not be deleted. So if you have some important object which you want to protect from unwanted delete, then what you can do is you can apply object lock. Okay, and object lock, if you want this feature, then you this feature can only be applicable while creating the bucket. When you are creating the bucket, you make sure that object lock feature should be enabled. So, okay, right now object lock feature is what? Right now, object lock feature is Disabled. 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 Let me see if I can enable it. So object lock work for the version. So it is saying ki I can enable it, but for enabling, I need to have one more thing enabled. So I have just done that. So I can save the change. Now I have enabled I have enabled object lock. Okay, so object lock is now enabled. So in this bucket, I can go and I can apply an object lock here. So this is the object. Let me see the options. Go to the actions. Downloads as shared with a pre-signed URL, calculate total size, copy, move, make public, metadata, object lock, initiate, restore, copy, public. We have to see whether the object lock is there, object action is there, and calculate, copy, object to versioning, storage class, encryption, metadata. Yes. So here object legal hold, object lock retention is retention mode. So edit, let me enable it, and retention until what? So I can put up a date that
till 31st March, nobody, this is the date that I have applied to this particular object. So the retention date is till that is that till here. So now, as I put the log, I am a admin and I cannot go and delete this guy, because there is a object lock. The object lock on this object is of type retention period. So I cannot go and delete. So if I try to delete this also, let me see whether it allow me to delete or not. So if I go and try to delete this object, okay, it allowed me to delete. Maybe I am the owner. Wait a minute. It is allowing me to delete. That should not be the case. Uh, we have to see. One second. Object lock. Object with object lock. Okay, so there is something called compliance mode. So object lock in compliance mode. Let's go and take a look to again. Okay, so upload the object, add a file. Day by day they change the interface, so it's become troublesome too. So I am uploading the object. Let's put an object lock. This is the object. Let's put the object. This is the object. Go to the permission, object lock. Legal hold is disabled. I'm interested in this. So enable and compliance mode. Okay. So compliance mode and governance mode is there. So retention mode. So object lock can be applicable in two methods. One is either you can put a retention mode or you can put a legal hold. If you are going for retention, please make sure you have two modes: governance mode and compliance mode. So if you are putting in compliance and if you are putting the date, okay, let's put by 31st Jan and save it, and now try to delete this guy. So go to here, go to the bucket, select the object, try to delete it. Let's see what it says. Give the delete, try to delete, try to delete. Again it is deleting. सर रिटेंशन पीरियड कहीं स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता क्या? वहां तो डेट स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, 31 का, 31 डेट, 31 तक का तो स्पेसिफाई कर रहे हैं. ओके, ठीक है, मैं इसको मतलब इसको करके देखना पड़ेगा. वी ऑल कैन ट्राई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिंपल थिंग. वी कैन गिव अ ट्राई. दो लेट मी सी, बाकी ब्राउजर को कंप्लीट क्लोज करते हैं, एक बार मैं ट्राई करता हूँ. लेट मी आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी क्या बोलता है वो. ऑब्जेक्ट लोड गवर्नेंस मोड डिफॉल्ट है, कंप्लायंस स्ट्रिकर, डिलीशन बाय रूट यूजर नॉट अलाउड इवन बाय द रूट. वंस द ऑब्जेक्ट लोड्स इन compliances, no user can modify or delete the object until the retention, including this mode is used for regularly compliance. तो वी हैव डन सो, बट क्यों ये डिलीट कर दिया? हमने कंप्लायंस, ये कंप्लायंस मोड में ही किया था ना, बट वो क्यों ये कर दिया? ओके, वील सी. ठीक है,
So try to do this, try to debug more कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है. एंड लेट मी सी द प्रॉपर्टीज, बकेट लेवल पे क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देखना होगा. हमने ऑब्जेक्ट पे लगा दिया, default retention is disabled, object lock, we have to see something is wrong or we might not be doing something correct. So The enable, default rate. enable और यहाँ पर है compliance, ठीक है. default remuneration period 30 days, 30. So हम एजिट ऑब्जेक्ट default retention सेव कर रहे हैं. confirm, confirm, ठीक है. confirm enable compliance mode. ओके. सो नाउ इस बकेट में हमने एक फीचर डाला है, बकेट की प्रॉपर्टीज है. तो एक बकेट में कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है. बकेट में बकेट वर्जनिंग एक प्रॉपर्टी है, टैग एक प्रॉपर्टी है, इंक्रिप्शन एक प्रॉपर्टी है, इंटेलिजेंट, ये सब प्रॉपर्टीज है. तो अगर हम बात करें तो बकेट की एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट लॉक. और हमने यहाँ पर डिफॉल्ट रिटेंशन कंप्लायंस कर दिया. अभी हम करके देखते क्या होता है, ठीक है. लेट्स गो हियर एंड ट्राई टू अपलोड द ऑब्जेक्ट इन द बकेट सेम. लेट्स गो. देयर इज नो अपलोड, सो add a file, go for a upload. Okay. So okay. Okay, so I'm uploading a file and I click on upload. So object तो अब upload हो गया. Object पे जाते हैं. Let's go to the object. Permissions, properties. This is object level properties, guys. यहाँ पर metadata, object, legal hold, retention period. तो 30 दिन का लगाया है, कम ये चीज है. तो अभी ये बाय डिफॉल्ट लग के आया है, ठीक है. So this is already by default in place. Okay. Now go to the bucket, try to delete this guy. Select this and click on delete. Copy, delete. Still it is deleting. Okay, so this need to be checked or there is something wrong. I will check क्या होता है इसमें, ठीक है. But still you can follow this one. कहाँ से क्या करते हैं. So this object lock is feature that can be used. It works on a principle of ROM, WORM, that is called as write once, read many times. Okay, and it helps you for accidental delete. In case you go with retention period and go or for a legal hold, but हमने यहाँ पे try किया but it is getting deleted. We will see what we can do about it. So S3 object lock is very simple stuff. Okay, so we'll keep today for this much. Okay, on a lighter note, tomorrow we will be learning about data consistency model. What is data consistency model? And there are two type of data consistency model that we will be learning. Tomorrow we will learn about AWS storage classes. What is AWS storage classes? What is intelligent tiering? What is S3 lifecycle policy? And what is versioning. And maybe jitna time ho sakta we will see versioning. There is something called as S3 transfer acceleration, cross region replication. Then we have S3 security, encryption, AWS data sync, gateway, and then we have last is snowball. So it will take tomorrow class and it will take upcoming class. So it will take minimum 3 class to complete S3 portion. So tomorrow we will continue on S3 and on 11th also we will continue on S3, guys. Okay. I have shared IAM labs. I want everyone to complete their labs, do the documentation, upload that documentation on GitHub as I told you. Okay. Any other thing that you want from my side, just let me know. सर आपका जेटा बंडल स्टोर कर दो शेयर कर दोगे क्या सो दैट क्या वी कैन ऐड कैसे यू करूं?
सर जिट आपका जिटअप यूजर नेम, सो दैट हम लोग आपको ऐड कर सकते हैं इसमें, रिपो में। आप अपना रेपो में अपलोड कीजिए एंड जस्ट पुट द रेपो सो दैट वी कैन सी। सर मैंने किया तो वही हुआ है, लेकिन प्राइवेट रिपो बनाया था मैं, पब्लिक बनाया नहीं था हाँ, इसलिए। तो पब्लिक कर लीजिए। यू ठीक है। नो हाउ टू डू पब्लिक? या ओके, गुड। So this is what for today's class, guys. Okay, and let's go and study more. Okay, so this is very very important. How a bucket and object works. Documentation is important. Class में we will give time also. We will help you understand कि documentation जो है करेंगे तो benefit रहेगा आपका, क्योंकि it will help you in interviews. So very important, you should document it. एंड लैब इज फाइन। सो आज आप लैब क्या क्या करेंगे? आप बकेट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे, पब्लिक प्राइवेट देखेंगे, ठीक है, कंडीशंस चेक करेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। जिनका पीछे का पेंडिंग है आई एम का, कंप्लीट द आई एम लैब, ठीक है। यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, यूजर को ग्रुप पॉलिसी देना, यूजर में लॉगिन करना, ए डब्ल्यू एस कॉन्फ़िगर, ए डब्ल्यू एस एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। Cool. Any other questions? Any other questions? Anyone? Yes. ये सर ग्रुप में 2 क्वेश्चन डाले थे। कौन सा क्वेश्चन डाला आपने? सर व्हाट्सएप पे डाले थे मैंने। एक ये। तो ये था। हाँ, एक तो ये था और एक और भी था। हम्म, तो ये आप पॉलिसी बना रहे किसके लिए? अपाचे काफका एपीआई फॉर एमएसके? सर मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था कि मल्टीपल इस तरह से ये करके, सो आई वाज जस्ट चेकिंग थिंग्स आउट, तो कि एक पॉलिसी बनानी है, सॉर्ट ऑफ इस तरह से पॉलिसी बनाए कि कुछ रिसोर्सेज का फुल एक्सेस देना है, सो दैट आई कैन असाइन इट टू से कोड बिल्ड, एंड सपोज मैं अपने कोड रिपो से कोड अपना कमिट करूँ, एंड आई वांट टू हम्म। क्रिएट सर्टेन इंस्टेंसेस डायरेक्टली, मतलब जैसे सर्वरलेस या ये यूज करके, तो आई कैन डू दैट। सो उस टाइप से आई वाज ट्राइंग टू कि उस तरह का पॉलिसी बनाने का ट्राई कर रहा था, तो आई जस्ट केम अक्रॉस दीज 2 ऑप्शंस। सो वही ये ये कुछ पहली बना। चीज है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। सो हाँ हाँ। ऑप्शनल है। ये क्या कर रहा है? यूजर इज एमएफए ऑथेंटिकेटेड, request from a IP. So you are creating a policy which is giving controlled access. So this policy will only be applicable if the user is MFA authenticated. So if you assign this policy and if the user is not MFA multi-factor authenticated, that will be not be applicable. And and in this policy you are specifying the user IP. So if the user is not accessing from the that particular IP, still this policy will not work. That is what it is saying, these options. ओके या। So I have seen this one. One is user MFA authenticated, but I haven't seen use of requested IP. ओके But that's a use case, and if you help me, then we can creating custom policy is little bit trickier at this moment. But if you या want, I can help you with creating a custom policy. Custom policy या is when you will, when you learn more about AWS, that time you will get to know. But if you want, like go to this policies, and go to the policy, and there is something called create policy. Okay, create policy. या So in create policy, the best way to create the policy is not through this, through JSON part. Okay, so या। if you want to create some policy, what is your policy which you want to create? तो सर जैसे Any? Hmm. so for example, I want to create a policy and attach it to a role, and you assign that role to a code build project, so that अगर मैं किसी कहीं भी कुछ डिप्लॉय कर रहा हूँ तो Oh, I got it. I got उसे it. उतने हाँ, करें।
हाँ, हाँ। मैं ये पूछ समझना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी आप बना रहे हो वो हम्म, पॉलिसी के अंदर क्या होगा, मतलब वो पॉलिसी में क्या होगा, कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सेस चाहिए, कौन सी जैसे सर्विसेज को नहीं सही चाहिए, तो कौन सी सर्विस सर, को एक्सेस चाहिए। लै, मान लैम लीजिए मैं, हाँ ठीक हाँ, है, EC2 एक ऐड कर लिया, एक फिर हमने लैम एक, हाँ एक मिनट मैं बता रहा हूँ। पहले हमने ठीक है आपके हिसाब से चलते, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स गो एंड सेलेक्ट वन मोर पॉलिसी दैट इज लैम्डा। अब लैम्डा हमने यहाँ, अब लैम्डा में यहाँ पर एक्शन है, ठीक है, तो फिल्टर हम्म, एक्शन। अब जो पॉलिसी बना रहे हैं वो अलाउ करेगा कि डिनाई करेगा, तो पॉलिसी हम जो बना रहे हैं वो अलाउ करेगा। अलाउ अब करता इसमें क्या है कि लैम्डा में क्या क्या काम करवाना है, तो लैम्डा में अगर मैं ऑल कर देता हूँ तो ये लैम्डा के जितने भी हैं सबको सेलेक्ट कर लेगा। तो ऑल करना है क्या, नहीं, तो मुझे लैम्डा में क्या क्या करना है, तो मुझे लैम्डा में रीड क्या क्या करना है, उसके बाद रीड आप पूरा दे सकते हैं, ऑल रीड दे सकते हैं, और आपको राइट किसका किसका करना है। तो लैम्डा में आप जो इस पॉलिसी में क्या क्या क्रिएट करवाना चाहते हैं, जैसे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट जितने भी हैं मैं वो दे देता हूँ, लेकिन मैं डिलीट किसी का नहीं देता हूँ। तो वो बंदा क्या कर पाएगा कि वो रोल जहां पर अटैच है तो वो क्रिएट कर सकेगा, डिलीट नहीं कर सकेगा, कुछ इस तरीके से है। तो है। आपको, हाँ आपको फिर क्या होगा ना, हर हर फंक्शन का, हर एक्शन का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि डिलीट लेयर वर्जन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, यप। इनवोक फंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, पब्लिश वर्जन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो जो चाहिए वो मान लीजिए मैं रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट करूँ कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, और डिलीट फंक्शन, डिलीट एलियास ऐसा मुझे चाहिए, रीड चाहिए, राइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ऐड परमिशन, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। और सर S3 बकेट के लिए चाहिए। तो S3 बकेट में चले गए। अब S3 बकेट आप पढ़ रहे हैं। अब S3 बकेट में क्या क्या एक्शन अलाउ है, S3 बकेट में आप रीड करना चाहते तो सारे जॉब हम रीड कर दे रहे, और उसके बाद यहाँ पर राइट है। तो राइट में हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या वो रोल कोई बकेट बना सकता है, यस। क्रिएट बकेट कर सकता है, क्रिएट बकेट हम दे रहे हैं, वो डिलीट कर सकता है ऑब्जेक्ट को, यस। क्या यस। वो, हाँ क्या वो कोई पुट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई फाइल अपलोड कर सकता है क्या, तो ऐसे यस। करके आपको इन सब का मीनिंग समझना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग में इतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। ये आपने कर लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट पे गए, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका नो रिसोर्स आर स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाई द रिसोर्स सेलेक्टेड एक्शन। यहाँ पे रिसोर्स हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, रिसोर्स रिसोर्स रिसोर्स। अब ये पूछ रहा है कि ये सारे रिसोर्स पर है, ठीक है, यहाँ पे हमने सारा रिसोर्स कर दिया है, और यहाँ पर हमने सारा रिसोर्स कर दिया है, ठीक है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक में जाता हूँ तो यहाँ पे पूछेगा, अगर मैं एनी करता हूँ तो फिर पूछेगा कौन सा बकेट में चाहिए। तो ये थोड़ा, अगर हम ब्रॉड लेवल पे बना रहे हैं तो नेक्स्ट में जाएंगे। अब ये पॉलिसी का नाम आप दे दीजिए, मैंने यहाँ पे डेमो अंडरस्कोर पॉलिसी दे दिया, ठीक है, और ये पॉलिसी ये है, और क्रिएट किया है, ये पॉलिसी हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज द पॉलिसी दैट गॉट क्रिएटेड। व्यू पॉलिसी करेंगे तो ये पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी का अगर मैं देखना चाहता हूँ जेसन में, तो ये पॉलिसी आया है, ये पॉलिसी, दिस इज व्हाट द पॉलिसी गॉट इट। अब इस पॉलिसी में क्या है, ये पॉलिसी, ये जेसन पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। ये क्या कर रहा है, ये पॉलिसी है जो कि अलाउ करेगा, कौन कौन से एक्शन अलाउ करेगा, ये सारा एक्शन अलाउ करेगा, दीज ऑल एक्शंस आर परमिटेड। तो जिसको भी आप ये पॉलिसी असाइन करोगे वो बंदा ये सारे एक्शन कर पाएगा किसी भी रिसोर्स के ऊपर, ठीक है। नाउ यू गो, यू कैन हैव दिस पॉलिसी, यू कैन असाइन दिस पॉलिसी टू एनीवन, टू एनी यस। रोल। Go to role, try to create a role, and this role will be on code build. So this role is on code build, code build पे जाएंगे, एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, एंड यहाँ पर हम, यहाँ पे जो पॉलिसी है वो हम सर्च करेंगे जो हमने क्रिएट करी है। तो जो हमने क्रिएट करी है वो यहाँ पर आ जाएगा, डेमो पॉलिसी। सो दिस इज हाउ। बट ये पॉलिसी जो है वो कितना कारगर है, कहने का मतलब है
did we added all the verbs which are required? If not, then we need to update the policies slowly Yeah. and gradually. Yeah. Understood. Okay. Yeah. Like this, you have to give the role in a demo role XYZ and then you can create a role. Yes. Any other questions from anyone? Any other questions from anyone? Uh, root access management. You okay? So you don't need to do this, okay? Because ये organization you are not doing. Hmm, okay. I think anybody having any Pramila has done it. Okay, that's good. I have seen that. So this is how everyone has to do their labs. Okay, then only you will able to understand the concept. So better you can add your name Pramila and यहाँ पे जो आप स्क्रीनशॉट डालते हो ना तो यहाँ पे भी नाम आ हाँ Okay. एंड लॉग इन विद या कूल सो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो इससे आपको क्या समझ में आया व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्क कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन हियर Yes. So first, I have created the user and assigned the IAM full access role to that particular user, and then I have रोल created नहीं the रोल नहीं sorry रोल policy document. यस I have assigned the policy document to that particular role, that is IAM full access policy, and then I have logged in using that user and try to create the EC2 instance. ओके But I have just assigned the IAM full access policy document, so I am not able to create the EC2 instance. Then ओके again, I assign that EC2 instance policy document to that Mayuri वेरी user, गुड and वेरी गुड then I have created the instance हम्म web server, हम्म and then I also access that instance using the public IP and access key, and वेरी गुड I have created again the I have configured that means रोल IAM role. Yes, यस नाइस 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 and after that slide 14, I think I have added that role in one group. ओके आपने 2 जनवरी को किया वेरी गुड कम से कम या सो यू आर serious toward your studies and this is good part okay and you have created so now you know how to create user how to create user graphically how to create user command line how to Yes, assign role to a user very good ठीक है okay so yes, these are the commands that I have given now you have yes, to also search कि और कौन से commands हैं ठीक है तो दिस इज गुड प्लस आपने यहाँ पे एक्सेस की सीक्रेट एक्सेस की तो क्रॉस किया दिस इज वेरी गुड पार्ट ओके दिस इज गुड yes. so thank you and so Thank you. whoever is not done so uh, please do it joining the class will not help you with proper labs you know तो labs करना जरूरी है that will help you okay cool so that's it for the day and thank you guys tomorrow we will straight jump to the topic and I want you to revise it जो जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए हैं आप क्विकली रिवाइज कीजिए यू नो Yeah. कूल थैंक Yes. यू Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you so. ओके बाय टेक केयर